Hey guys, how are you? I'm Sakshi and आज मैं मेकअप करने वाली हूँ आई मेकअप राइमा सेन जैसा ओके बिकॉज आई फील दैट हर आईज आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव तो मैं ट्राई करूँगी एक स्मोकी आई करने का जैसे यू नो शी डज सो आई नो आई एम बैक आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं DIYs करती हूँ यूजली इफ यू गाइज डोंट नो मी आई एम साक्षी भटनागर and my Instagram ID is Sakshi241 so you guys can follow me there and मैंने जिन लोगों को delete करा है अपने followers में से I'm so sorry I had to do that because I was corona positive and I wasn't well okay so kindly adjust okay so please follow me again and yeah I'm making videos again now so yeah follow me on Instagram and also hit the subscribe button over here. I have seen that many people you know actually like my video but then they don't actually subscribe it so subscribe it okay let's get started. So basically Reema Sen is all about Kajal okay so first I'll be applying Kajal okay just don't hold it very tight from here because उससे लूजन हो जाती है यहाँ की जो स्किन है हमारी ओके so I've applied here and after this I will apply on my upper lid okay I know कुछ लोग डरते हैं ऐसे करने में but it's fine and now like on the top of my eyes I just you know draw a line and उसको smudge करूँगी मैंने पहले से ही एक लगाया हुआ था मस्कारा लगाया हुआ था that's why it's giving that look don't worry so on the both of the eyes you have to do like this so ये मैटर नहीं करता कि ये शेप में है या नहीं बिकॉज हमें इसको स्मच करना है तो मैं अभी एक बहुत ही बेसिक ऑरेंज कलर लूँगी ओके better to see on camera so I'm just trying to do like Reema Sen she has so beautiful eyes and this color is looking really good I don't know if you guys can you see ये बहुत डार्क भी नहीं है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है I can actually make it out कि काफ़ी अच्छा बनेगा इनर कॉर्नर से यहाँ तक लेकर आना है ओके and once you learn that तो बहुत अच्छा है ओके सो अभी मैं काजल का रोल बताती हूँ इसमें आगे क्या है नाउ आई विल स्मज इट ओके यहाँ पे मैंने जो लगाया है उसको मैं स्मज कर दूँगी अच्छे से सी हाउ इट्स गिविंग अ वेरी डिफरेंट लुक राइट नाउ you know I can see myself in the camera and बहुत different look there है and again we'll do one more thing with the kajal let's get started we are actually copying Reema Sen here so now अब काजल मैं लगाऊंगी थोड़ा सा बोल्ड यहाँ पे ओके लोअर लिड में ओके आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस बट हमें इसको ऐसे नहीं रखना है हमें इसको स्मच करना है ओके so we should start smudging okay I think काजल काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी बोल्ड लुक दे रहा है the way Reema Sen does it and इसको बस थोड़ा सा और स्मच करना है तो मैं अपनी आई शेडो जो है वो दोबारा लूँगी बिकॉज आई थिंक स्मच करने के चक्कर में काफ़ी बोल्ड हो गया है एंड आई विल क्रिएट अ लुक आई एम सो सॉरी ये डिस्टर्बेंसेस जो पीछे से आ रही है उसके लिए एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक लुकिंग वेरी नाइस बट मैं अपना लिप शेड जो है चेंज करूँगी अब अकॉर्डिंग टू Reema Sen बिकॉज मुझे पता है कि Reema Sen इस टाइप के लुक के साथ किस टाइप की लिपस्टिक्स लगाती है एंड आई एम हर ह्यूज फैन एंड सो या बेसिकली वी आर कॉपिंग हर हेयर ओके सो नाउ आई विल अप्लाई लिप बाम ओके लिप बाम बहुत इम्पॉर्टेंट है पहले लिपस्टिक से पहले सो दैट इट गिव्स अ ग्लोई लुक एंड मेरे पास लाइट पिंक कलर अभी नहीं है इट्स बिट ऑरेंजिश ओके एंड बेसिकली इट्स L03 pumpkin latte okay if you can search so yeah so the last thing I'll do is mascara okay so first I will actually increase my length by this lengthening mascara
Okay, I don't have enough of blending mascara right now, and then I will give volume to it. Guys, ये जो है ना जिस वे से मैं कर रही हूँ अभी ये राइट वे है टू अप्लाई मस्कारा. Like people complain कि उनकी आई लैशेस ज़्यादा लंबी नहीं लगती हैं, but you should know how to actually apply mascara. And after that मैं अपनी lower eyelashes पे भी लगाऊंगी. Okay, so I have a tip to give you guys. मतलब छोटा सा टिप है. अगर काजल ज़्यादा स्मच नहीं हुआ है, okay, then you can take मस्त काजल eyeshadow, okay, and then do it. Oops, it entered my eye. See, now it's looking more smudgy. Okay, can you notice the difference? अभी जो पहले था और अभी जो है उसमें बहुत डिफरेंस है. बट पहले आपको काजल से ही करना है, ओके, एंड देन आपको आई शैडो का यूज़ करना है. परफेक्ट. What kind of makeup I have done, and it is so similar to Reema Sen, and it is actually beautiful and very very attractive. And मैं हर पार्टी में ट्राई करती हूँ कि मैं Reema Sen जैसा ही अपना आई मेकअप करूँ, and it looks very attractive, very beautiful. So you can just wear this kind of makeup like anywhere जहाँ मन करे, ठीक है. तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, एंड ऐसी और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी मेरी वाली वीडियो तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगी, राइट. सो ऑन मेकअप, मैं मेकअप पे वैसे इतना करती नहीं मेकअप, बट जितना करती हूँ थोड़ा बहुत करती हूँ, ओके. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोस. बेसिकली आई लव टू व्लॉग एज वेल. सी यू, टेक केयर, एंड डू सब्सक्राइब. बाय. I just want somebody